हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट लॉ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आगे आने वाला यूजीसी नेट जो आएगा उसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर करता है कॉपीराइट, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी पेटेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कवर करता है ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एन ऑब्जेक्टिव ओवर द राइट ऑफ ऑनरशिप विच extend to option A patents, option B property and option C is trade and option D tapes. So option B is the right answer, property. And our next question is intellectual property protect the use of information and idea that are of ethical value, option B moral value and option C commercial value and option D is a social value. Then right answer is commercial value. जो intellectual property है वो protect करता है हमारी information idea किसके लिए? commercial value के लिए, ठीक है। The next question is corporeal property is always option A visible, option B tangible and option A and B and option D is none of the above. Then right answer is बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम अटैच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, ठीक है, मीन विजिबल और टेंजिबल विच कैन बी टच। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर option A is musical, option B is literary and option C artistic work and option C is all of the above. Then right answer is option D all of the above. जो हमारा म्यूजिकल, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है वो इंटेंजिबल असेट्स हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंशंस लॉ ऑफ made the first systematic attempts to protect invention by a form of patent. Then option A is 1274 and option B is 1474 and C is 1662 and D is 1840. The right answer is 1474. The next question is objective of intellectual property is option A to promote creativity and innovations and option B is to eliminate inventors and option C to protect the interested parties and option D to promote a legal work. Then right answer is option A to promote creativity and invention. जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम जो क्रिएटिविटी और इन्वेंशन है उसको प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gutenberg was related to the system is option A trade and option B is copyright and option C is invention and option D is none of the above. Then right answer is copyright. And next question is copyright is a bundle of right given by the law to the creator of option A literary, option B dramatic, option C is musical and option D all of the above. The right answer is all of the above. And next question is space dash do not have a copyright protection is a concept, मतलब इनमें से कौन किसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलती? ऑप्शन ए कंसेप्ट्स, ऑप्शन बी इज आर्टिस्टिक वर्क, ऑप्शन सी इज साउंड रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी इज अ प्रोसीजर ऑफ सिनेमेटोग्राफी। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंसेप्ट्स को जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन फॉर द कॉपीराइट कैन बी फाइल्ड इन IP ऑफिस, कॉपीराइट ऑफिस, civil court and option D is Department of Trade. Then right answer is option B, Copyright Office. The next question is computer software or computer program computer software or program
कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज, जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर प्रोग्राम है वो रजिस्टर्ड होता है एज अ लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, acquiring work or legal work. Then right answer is literary work. The next question is, as per the Copyright Act, literary work include computer program and computer database. As option A is 1972, 1957 and 1975 and 1998. Then right answer is 1957. जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है उसको जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब जो कि इंडिया में है, वो कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, ठीक है। और जो हमारा बीपो है वो बीपो स्टैंड फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑप्शन डी इज अ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देन राइट आंसर इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है बीपो की फुल फॉर्म, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Next question is, industrial property means a property that is used for manufacturing, processing and warehousing, and option D is all of the above. Then जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसका मतलब होता है अ प्रॉपर्टी जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जाए, प्रोसेसिंग हो, वेयर हाउस हो, ऑल ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Next question is, industrial property included geographical indication, option B color and design, and D logo. Then right answer is geographical indication. The main function of the trademark are option A identification of goods, and option B is identification of source, and option C is both A and B, and option D is none of the above. Then right answer is identification of goods and identification of source. The next question is, Trademark Act 1999 was adopted and come into force on option A 2000, option B 2001, option C is 2002, and option D is 2003. Then right answer is 2003. And next question is, a patent right granted over for an option A identification of source, invention, or option C is identification indication about क्वालिटी, एंड ऑप्शन डी इज गुड्स एंड सर्विस। देन राइट आंसर इज इन्वेंशन। जो हमारा पेटेंट राइट मिलता है वो इन्वेंशन के लिए मिलता है, ठीक है। और हमारा जो ट्रेड राइट है वो किसी लोगो पर मिलता है, या हम कुछ भी नया जो है अपनी बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉपीराइट तो आपको पता ही होगा, वो इसलिए मिलता है हमारा लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क या कोई भी बुक लिख दी, इसके लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ब्रीफ में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका पूरा एक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सबको डिस्कस किया। यदि आप आगे आने वाली वीडियोस में अब मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उस वीडियो को जाकर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि और भी बहुत ज़्यादा, जैसे IPCs की काफ़ी ज़्यादा 31 वीडियो हो चुकी है, उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो है वो सेक्शन कंप्लीट करवा दिए, आगे भी करवाऊंगी। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी, उसको भी कवर करवाया गया है। आप जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देखिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट was adopted in 1850, 1883, and the option C is 1901 and option D is 1922. Then right answer is 1883. And next question is, after freedom of India, the Patent Act come into force on 20th April. As option A is 1965 and option B is 1972, option C is 1984 and option D is 2001. The right answer is 1972. The next question is, industrial design are an element of. Option A is industry, option B is IP, option C is BPO, and option D is
WIPS. Then right answer is industrial design are the element of intellectual property, IP. ठीक है. The next question is the existing legislation and industrial design is an India is contained in New Design Act is in 1984, in 1996, 2001 and 2011. Then right answer is 2001 to the 2000. Okay. Then next question is a new way to process milk so that there is no fat and any cheese made from it is an example of mean एक process बोले एक new way of process मिल्क बनाने की जिससे क्या है फैट नहीं होता तो वो क्या किसका एग्जाम्पल है क्या एक कॉपीराइट का एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क का है पेटेंट का है या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है देन राइट आंसर इज पेटेंट ठीक है कि पेटेंट है जिसमें आप न्यू इन्वेंशन कुछ भी इन्वेंट करते हो प्रोसेसिंग किस तरीके से उसको इन्वेंट किया जा रहा है उस पर जो है वो राइट मिलता है तो वो पेटेंट होता है ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is known as a father of liberalism then John Locke and G.W.F. Hegel and R.D. S. Singh and option D is none of the above then John Locke is the right answer ठीक है is a father of liberalism. The next question is the natural right theory considered that everyone has a natural property right on this. Option A is theory, option B is a personality, and option C is a personhood, and option D is expect. Then right answer is option C, theories. Then next question is a temporal limitation is applicable to is option A is BPO, option B IP is option C is a personality and theories. Then right answer is IP. And According to Mill, the objective of any policy should be the attainment of the greatest good for option A is theories, option B is personality, and option C is greatest number, and option D is all of the above. The right answer is the greatest number. Okay. The next question is the reward theory advocate rewarding. Option A is ethical, option B is a journal, and option C is a personhood, and option D is individual. The right answer is option D. And what is the meaning of T in a TRIPS agreement? ट्रिप्स की का बोला है इसमें जो मीनिंग है ट्रिप्स का वो क्या मीनिंग है टी का ठीक है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओके Then option A is tax and option B is treaty, option C is trade, option D is technology. Then right answer is option C. And next question is WTO agreement come into force and then option A is 1990, option B is 1995, option C is 2000 and option D is 2005. The right answer is 1995. Next question is the Paris Convention was adopted in 1855. Then next option is 1883 and option is 1905 and 1955. Then right answer is 1885. The next question is which of the following is not an intellectual property law? Is option is Trademark Act 1999 and Patent Act 1970, Design Act 2000 and D is a Custom Act 1962. Then right answer is Custom Act 1962. India has been the member of Berne Convention since is the 28th April is 1914 and 28th April is 1929 and 28th April is 1934 is 28th April in 1958. Then right answer is 28th April 1928. Then next question is what is the meaning of U in UCC? ठीक है then United Nations and option B is universal and option C is under and option D is none of the above. Then right answer is universal. ठीक है
The next question is UCC was adopted in dash in Geneva, Switzerland. UCC को कब अडॉप्ट किया गया था? Is 1940, is 1942, and option C is 1952, and option D is 1962. The right answer is 1952. Then next question is India become a member of WIPO in the option A is 1962, 1975, and option D is in 1980. Then right answer is 1975. Then next question is the protection duration of patent as under Patent Act 1970 is 10 years, 20 years, 30 years, and option D is 40 years. The right answer is option B, 20 years. The next question is protection during the industrial design is option A is a 10 year, option B is 20 years, option C is 30 years, and option D is 50 years. The right answer is option A, 10 years. And features of TRIPS agreement are standard, enforcement, and C is dispute settlement, and option D is all of the above. बोला है ट्रिप्स का कि क्या ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो उसका क्या फीचर है? देन स्टैंडर्ड्स और इन्फोर्समेंट और डिस्प्यूट को सेटल करना. The next question is following area of IPR covered under the TRIPS agreement is a trademark, industrial design, right of a performers, and producer of sound recording or broadcasting organization, layout, design of integral circuit. देन आपको ये कोड दिए गए हैं, आप उन्हें इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना है. देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज टैंजिबल, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इज having no physical existence. Then right answer is of both A and B. जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है वो टेंजिबल होती है क्योंकि उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब उसको हम ना टच कर सकते हैं ना विच कैन नॉट टच एंड नॉट सीन. ओके. Then next question is consider the following statement. Intellectual property is a legal concept which referred to creation of the mind for which exclusive right and recognize. And next is intellectual property are right are intangible property. Then right answer is both A and B. ठीक है. इसमें बोला है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल कंसेप्ट है जो रेफर किया जाता है टू क्रिएशन ऑफ अ माइंड जो कि एक्सक्लूसिव राइट और आर रिकॉग्नाइज है, और दूसरा है कि ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है. ठीक है. मीन उसको हम देख नहीं सकते, हमें जो राइट मिलते हैं उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हमारे वो राइट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लीगल राइट होते हैं. Next question is consider the following statement. Copyright is a bundle of right given by the law to the creators of literacy, literary and dramatic, musical and artistic work. And option B is copyright of a work of countries mentioned are in the international copyright order are protected in the India as if such work are Indian work. And option A is only two, and option C is both A and B, and neither A nor B. The right answer is both A and B, mean 1 and 2. Okay. The next question is consider the following statement as industrial property mean a property that is used for manufacturing process or warehousing, or industrial property included logo, symbol, design or image. Then only right answer is only one. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता लोगो और सिंबल डिज़ाइन, क्योंकि ये जो लोगो सिंबल डिज़ाइन है वो ट्रेडमार्क में इंक्लूड होता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कॉपीराइट
copyright come into existence as soon as work is created and no formality is required to be completed for acquiring copyright. And the 2015 amendment make India copyright law compliant with internet treaties like a WCT and WPPT, and the right answer is only A. Copyright come into existence as soon as work is created and no formality is required to be completed for acquiring copyright. The next question is, consider the following statement as the Indian Merchandise Act, Mark Act 1889 was followed by the Trademark Act 1940, and B is a trademark is typically a name, word and phrase, logo, symbol and a combination of these elements. Then option A is only one, only two, and both A and two, one and two, and neither A and two, one and two. The right answer is both A and B. इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट जो है 1889 का, जो फॉलो करता है ट्रेडमार्क एक्ट 1940 को, और जो ट्रेडमार्क है वो टिपिकली द नेम ऑफ द फ्रेज, लोगो, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट है. ठीक है. The next question is, which of the following statement regarding the patent stands true? Is patent is an exclusive right conferred by the patent office, and it is a right for an inventor to exploit his invention and subject to the provision of Patent Act 1970 for the limited period of time. Option A is only one, option B is only two, and option C is both A and B, and option D is neither A and B. Then both A and B is the right answer. Okay. Both A and B. Okay. The next question is, consider the following statement as per the Patent Act 1970. Literary work include computer program, table and completions, and Patent Act 1970 was adopted and come into force on 20th April 1982. Then इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, नाइदर वन एंड टू. The next question is, consider the following statement according to the section 2 subclause 1 GB of the Patent Act 1970 of India. A patent should be capable of being represented graphically, and the fundamental principle of the patent law is that a patent is granted only for the invention which must have the novelty and utility. Then which one of the right answer is only A, only B, and only both A 1 and 2, and neither A 1 and 2? Then option B is right answer, only 2. The next question is, consider the following statement. Protection of Invention Act were consolidated in 1888 as the Invention and Design Act, and AIG is a sign used or on product that have a specific geographical origin and reputations that are due to that origin. is option. which one of the right answer? मेन इन दोनों में से स्टेटमेंट से कौन सी जो है वो सही है? देन only A, only B, and both 1 and 2, and neither 1 and 2. Then right answer is option C, is both 1 and 2. The next question is, which of the following statement regarding the utilitarian theory stand is true? An act utilitarianism is based on the principle of utility, which is based of all the utilitarian theory is the and next statement is, act utilitarianism is best summed up the Bentham well-known phrase, the greatest
happiness for the greatest number. Then right answer is both A and B as राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है. और next question is consider the following statement. Consider the following statement. The personality theory was propounded by Kant and Hegel claimed the intellectual right permit and protect the developing of personality. And next statement is the personality is neither linked for nor affected by the outcome of creation. Then option A is 1 and 2, and option B is 1 to 3, and option C is 2 and 3, and D none of the above. Then right answer is B, A 1, 2 and 3. The next question is consider the following statement is IP has only the international dimensions and WTO agreement on the TRIPS agreement brought with a new era in the multilateral protection of IP right. And three is the Paris Convention created the provision of national treatment. And fourth statement is in 1886 copyright entered the international area with the Berne Convention. Is option 1 and 2, option 2 and 3, option 3 and 4. Then right answer is all of the above. The next question is consider the following statement is IPR ensure that R&D cost and other costs associated with introduction of new product are recovered. And 1893 the United International Bureau formed for the protection of intellectual property. The Paris Convention was the first major international treaty, and the Berne Convention was first accepted in Bern, Switzerland in 1886. The right answer is all of the above. Then ये जो सारी ही स्टेटमेंट 1 2 3 4 है ये सारी ही सही है. The next question is 57 question. The provision of Paris Convention may be subdivided into the following categories as statement A. A first category contain the rule of substantive law, and B is second category established a right of property priority, and third category is defined the certain number of common rule in the field of substantive law, and a fourth category deal with the administrative framework. Then which one of the correct statement? Option A 1 and 2, and option B is 3 and 4, option C is 2 and 3, and all of the above. Then right answer is all of the above. Then next question is consider the following statement. The UGC was developed as a UNESCO as an alternative to Berne Convention. WIPO Convention was signed at Stockholm, Sweden, and WIPO main objective is to promote the protection of intellectual property worldwide, and the Indian become a member of WIPO in 1998. Then which one of the right statement? Option A is 1 2 3, and option B is 2 3 and 4, and option C is all of these, and option D is none of the above. Then right statement is 1 2 and 3. The next question is which one of the following pairs brief, इनमें से जो टू लिस्ट दी है इन पेयर को मैच करना है. पार्ट 1 में क्या आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो पार्ट 1 है उसमें क्या आता है. देन पार्ट 1 में क्या है आर्टिकल 1 to 8. पार्ट 3 में क्या है आर्टिकल 41 to 61. एंड पार्ट जो थर्ड है 5th है उसमें क्या आता है आर्टिकल 63 to 64. एंड पार्ट 7th में क्या है इस आर्टिकल 68 to 73. ये जो पेयर दोनों ही दिए गए थे 1 to 3 वैसे ही है, और राइट आंसर है हमारा सी. देन इसमें भी जो है पेयर्स को मैच करना है. यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किससे मैच करता है तो 1952 से, और विपो कन्वेंशन कब हुई थी तो 1967 में, और पैक्ट
कब आई थी? देन 1970 में। ओके, देन ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? 1991 में। देन नेक्स्ट में पेयर्स मैच करने हैं। कॉपीराइट क्या है? एक म्यूजिकल राइट है। पेटेंट क्या है हमारा? ये हर्बल कंपोजिशन है। और ट्रेडमार्क क्या है? एक नेस्कैफे। इसमें ये जो कंपनीज के नाम दिए गए हैं वो है। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? सिसिली, जो कर्नाटका का एक प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वो कब का है? 1957 का है। ट्रेडमार्क जो है वो हमारा 1999 का है। और जो डिज़ाइन एक्ट है 2000 का है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो है हमारा 1999 का। ठीक है, यही था हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर यूजीसी नेट। आने वाले यूजीसी नेट में अब बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरा जिस चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। यहाँ पर मैंने आईपीसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी अलग से क्लासेस ली हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो है वो इंडियन पैनल कोड की वीडियोस भी हैं। लगभग 31 वीडियोस हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके।